अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और इम्तिहानात की तैयारी भरपूर तरीके से कर रहे होंगे। जिस तरह हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम LLB पार्ट 2, 3, 4 और 5 के गेस्ट क्वेश्चन लेकर आपके पास हाज़िर होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम LLB पार्ट 2 के गेस्ट क्वेश्चन लेकर हाज़िर हुए हैं। इन क्वेश्चंस को करने से आप इंशाल्लाह इम्तिहानात में 100% कामयाबी हासिल कर सकेंगे। तो बगैर किसी देर के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। मैं सवाल पढ़ता जाऊँगा। सबसे पहले है कुरान एज ए सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, सुन्ना एज ए सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, मुस्लिम जूरिस्ट्स एंड देयर रोल इन द कंपिलेशन ऑफ इस्लामिक लॉ एंड फ़िक़्ह, इज्तिहाद, क्वालिफिकेशन ऑफ द मुज्तहिद, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर इस्लामिक लॉ, Islamic concept of ownership, sources of revenue of an Islamic state, crime in Islam, had and tazir, qisas and diyat, evidence, qualification of the competency of witness including evidence of women, jihad, principles of Islamic war to deal with the prison of war. नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो है इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। क्वेश्चन नंबर 1, जूरिस्प्रूडेंस इन इट्स काइंड्स विद देयर स्कोप। सेकंड पे है इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, लेजिस्लेशन एंड इट्स काइंड्स, कंपेयर लेजिस्लेशन विद प्रेसिडेंट। 6 नंबर पे है कस्टम, इट्स काइंड्स एंड प्री रिक्विजिट्स। 7 नंबर पे है सब्सटेंटिव एंड procedural law along with their difference, legal rights, kind and their essentials, theories, forms of punishment, possession, its various kind and various modes of the acquisition of possession, evidence, its various kind and various modes of the production and evaluation of evidence। 12 नंबर पे है person and its kinds। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1, सबसे पहले है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नंबर पे है लीगल एंड नॉन लीगल सोर्सेज ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्राउन प्रीरोगेटिव्स, मैक्सिम 1, क्राउन इज एन इंस्टीट्यूशन विच नेवर डाइज। सेकंड, द किंग कैन डू नो रॉन्ग। थर्ड नंबर पे है नेचर, कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शन ऑफ cabinet in UK, powers of the prime minister in the relation of cabinet। 4 नंबर पे है power and function of the house of commons, house of common is more powerful than the house of lords, kinds of committee in the house of commons। this is exposition of rule of law, historical perspectives, development, present day form and criticism। Parliamentary sovereignty in England, conventions in British Constitution। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले नंबर पे है salient features of the USA Constitution and its historical development, role and powers of function of the US Congress and its limitations, American president qualification, role, power, election and impeachment। 4, question of separation of power with the system of check and balance in US Constitution, USA Supreme Court composition, role, power and jurisdiction, doctrine of judicial review in USA Constitution, landmark case of Marbury versus Madison 1803। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में सबसे पहले नंबर पे है डिफाइन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डिस्कस अप्रोचेज ऑन द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ ADRS टेक्निक्स एंड प्रोसेस, ड्रा ए कंपैरिजन बिटवीन ADR एंड लिटिगेशन एडवर्सल सिस्टम, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सक्सेसफुल नेगोटिएशन। 4 है explain what are the skilled involved in negotiation। 5th है elaborate the role of mediator and conciliator in the ADR proceedings and discuss the obstacles in the implementation of mediation in Pakistan।
Define the mediation and conciliation, difference between the mediation and conciliation. 7. Explore the historical development and role of courts in the promotion of ADRS in India and Pakistan. Highlight the salient feature of Indian Arbitration and Conciliation Act 1996. What are the judicial and legislative development trends in Pakistan with reference to the ADR? Examine the legal framework of arbitration in Pakistan and India. Elaborate the essentials of arbitration agreement. What do you understand by arbitration award? Explain the resources and challenges against arbitral award. 12 है elaborate the modes of international commercial arbitration and also discuss in detail with the classification of international commercial arbitration. 13 नंबर पे है give a brief sketch of ADR technique and process under international law and also enlighten the scope of ADRs in China Pakistan economic corridor. Explain the procedure of ADR to settle dispute under the World Trade Organization WTO. 15 नंबर पे है डिस्कस द स्कोप ऑफ ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ODR in globalized world. इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन राइट्स लॉ में सबसे जो पहला क्वेश्चन है गिव डेफिनेशन एंड ओरिजिन ऑफ द ह्यूमन राइट लॉ. आल्सो डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन राइट लॉ. what is rights and the notion of rights. Explain Islamic approach of human rights. Explain socialists approach of human right. What do you understand by bills of right? Which rights are protected under the Universal Declaration of Human Rights? Features, implementation and enforcement of UDHR. Which rights are protected under International Convention on the Civil and the Political Right? Feature, implementation and enforcement of ICCPR. 7वें नंबर पे है व्हाट राइट्स आर प्रोवाइडेड इन द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स ICESCR. फीचर्स, इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ ICESCR. 8वें नंबर पे है हाउ यूनाइटेड नेशंस is formulating, interpreting and monitoring human rights. Critically analyze the role of UN through suitable examples of today's world. What are human rights in the international rights regime? Explain the measures steps taken by the UN to eliminate discrimination amongst women. Which treaty convention deals with the women's rights? Discuss its main feature. CEDAW. What are minority rights in the international human rights system? How minority rights are protected and under human rights law. 12वें नंबर पर है how various rights are incorporated into the Constitution of Pakistan 1973. Discuss the remedies available under Article 199 and Article 184(3) of the Constitution of Pakistan 1973. पार्ट 2 से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चंस नहायत अहम हैं. हमने बहुत मेहनत से सर्च करके ये क्वेश्चन ढूंढे हैं और इन क्वेश्चंस को करने से आपको इम्तिहानात में इंशाल्लाह 100% कामयाबी हासिल होगी. हम पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 के बच्चों के लिए भी गेस्ट क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं. इंशाल्लाह वो जल्दी अपलोड हो जाएंगे. आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके. हम सब दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, अल्लाह पाक सबको इम्तिहानात में कामयाबी अता फ़रमाए
और सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बगैर किसी रुकावट के पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।